गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मूविंग थ्रू vectors, so many things I have told you about vectors. We have studied addition, subtraction in relation to vectors. We have multiplied a vector with a real number or a scalar. And now we will be studying about product of vectors. Product of vectors mean सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स अवेलेबल हैं ए एंड बी। ठीक, ओके। दे आर टू बी मल्टीप्लाइड यूजिंग सम वेक्टर नॉर्म्स, वेक्टर रूल्स। फाइन। अब फिजिक्स के डेवलपमेंट में होता क्या है, what happens basically, methodologies are developed afterward. ये जो कैलकुलेशन हम स्टडी करते हैं ना, पहले क्या होता है, पहले हम फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। ओके, जो भी कंसेप्ट होता है दैट इज मेड। आफ्टर दैट क्या होता है कि उसके रिलेटेड जो मेथोडोलॉजी है उसको डेवलप किया जाता है इन डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक, तो सेम वे जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कुछ क्वांटिटीज में बात कर रहे थे, ठीक, कुछ क्वांटिटीज के केस में हम बात कर रहे थे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम वर्क डन की बात कर रहे थे। वर्क डन वाले सिचुएशन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दीज बोथ, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ है, तब जाके मुझे वर्क डन मिला है। अब प्रोडक्ट जो हुआ है वो कौन से नॉर्म्स लगा के हुआ है उसकी अभी बात करते हैं। पावर P, फोर्स एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, यहां जो वर्क डन है आपका किस तरह का क्वांटिटी है बेटा? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस ऑल्सो is a scalar quantity. Mean we are multiplying these two vectors when multiplied they are giving a scalar result, that is work done. These two vectors when are multiplied are giving scalar result. Okay, and in some of the situations we have like torque, R, F. R and F, their product is creating torque. टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मीन इन दिस सिचुएशन दोनों वेक्टर्स प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं एंड दे आर गिविंग आउट अ वेक्टर रिजल्ट। ओके, एंगुलर मोमेंटम एल से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। फाइन, is made using product of R and P. P is your linear momentum, R is the radius vector involved. Okay, now अब situations जो हमारे पास अवेलेबल हैं, as per those situations angular momentum is a vector quantity. As per those situations what I am having, मेरे पास क्या बन रहा है? हाँ, देखो, दो वेक्टर्स
का प्रोडक्ट हो रहा है और एक स्केलर क्वांटिटी जनरेट हो रहा है. टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है एंड आई एम गेटिंग द स्केलर रिजल्ट. एंड हियर इन दिस सिचुएशन टू वेक्टर्स, okay, they are multiplied, their product is taking place and is giving a vector result. In this situation also two quantities, they are being multiplied, their product is taking place and I am getting a vector result. Mean in relation to product of vectors, जो सिचुएशंस अराइज होती हैं वो टू सिचुएशंस अराइज हो रही हैं. सिचुएशन वन इज product of vectors giving out scalar result, and the situation 2 is product of vectors giving out vector result. ऑलरेडी आप एनालाइज कर चुके हो. सी दिस. ओके, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ओके, दे आर गिविंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैनेज करने के लिए टू methodologies are developed. Two methodologies are developed where product of vectors giving out scalar product, उसको कहा गया is giving out scalar result, उसको कहा गया scalar product. Okay, and situation in which product of vectors giving out vector result, उसको कहा गया vector product. तो on the basis of available situation and scenario, two methodologies are developed to have product of vectors. Okay, scalar product and vector product. Mean in this situation product of two vectors is taking place giving out scalar result. So which type of product is involved here between two vectors? That is scalar product. Okay, two vectors are multiplying. Okay, two vectors, product is done and giving out scalar result, again the scalar product. Product of two vectors is taking place and is giving out a vector result. Which type of product? Vector product. Two vectors product is taking place and is giving out vector result. Vector product. तो कितने टाइप की मेथडोलॉजीज हुई हमारे पास? When we are considering, we are taking product of vectors, two. One methodology is scalar product, another one is vector product. अब देखो other names for this, scalar product. अब दो मेथडोलॉजीज है ना, दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डिफरेंट सिंबल्स बनाए. इसमें सिंबल लगाया डॉट स्केलर वाले में और वेक्टर वाले में लगाया क्रॉस. दोनों प्रोडक्ट के सिंबल होते हैं ना दोनों, और बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं दोनों. डॉट से भी हम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से भी. तो एक सिंबल स्केलर वाले में यूज कर दिया डॉट, और क्रॉस यूज किया हमने वेक्टर. ये अपनी चॉइस नहीं है, दिस इज फिक्स. ओके, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, and vector product also is called as cross product. It's okay, fine.
Now, how scalar product, that is dot product, is done and how cross product is done, just see. Scalar product or dot product. ठीक है? Suppose we are given with two vectors A and B and angle between them is theta. This is your A vector, this is your B vector, and angle between both the vectors is theta. Okay, then scalar product or dot product of these two vectors, okay, how that will be basically A vector dot B vector. Scalar product को represent करने के लिए dot we use is equal to magnitude of A, magnitude of A vector, magnitude of B vector, and then cos of angle theta between them. It's okay? Now magnitude, if only we are writing, then A, B, cos of theta we can write. Mean A dot B. Magnitude, 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 number, number, number. Mean this is just, this result is just a number. This is just magnitude. Okay, so result is a scalar quantity or a vector quantity. This is a scalar quantity. The result is scalar, therefore क्या है? Scalar product. So in scalar product we get result like this. Now vector product. Vector product. Vector product also is called as cross product. क्यों कहते हैं वैसे cross product? क्योंकि यहां पे जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं वो कौन सा सिंबल है? क्रॉस. लेट वी आर गिवन विद टू वेक्टर्स. वन इज योर ए वेक्टर, another one is your B vector. This situation is different from the previous one. Okay, तो A B कुछ अलग है and the angle, smaller angle between them is theta. अब मैंने टर्म यूज की smaller angle between A and B, theta. मैं ये भी तो कह सकता था, लेकिन वेक्टर्स के बीच में जब एंगल की बात करते हैं तो ऑलवेज स्मॉलर एंगल इज टू बी सीन. ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A and B, that is written like this: A vector cross B vector, and that is equal to magnitude of A vector, magnitude of B vector, and sine of theta. Theta is the angle between A vector and B vector. Okay, and after this all there is a vector n cap. A magnitude, B magnitude, sine theta, you know this. Magnitude, 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 number, number, number. So this part is just a number. This is representing magnitude. Okay. What is this? N cap. Pause karo and think of. Which type of vector is this? This is a unit vector. Unit vector in the direction of result. In the direction of result. Okay, ये A magnitude, B magnitude, sin theta, तो you will be able to calculate, no problem. Unit vector, इसका बात कैसे होगा? चलो बाद में बात. अब ये मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया. ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो अगर मैं कहूं what is the nature of result, magnitude and direction, they are multiplied together. So which type of result they are giving out? They are giving out the vector result. Okay, therefore ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? This is vector product or cross product. क्रॉस क्यों लगाया? बिकॉज सिंबल,
यहाँ पे जो हमने सिंबल इसके सिचुएशन में हम यूज कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस, देयरफॉर वेक्टर प्रोडक्ट आल्सो इज कॉल्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट. इट्स ओके. Now, result is vector, therefore this is a vector. Now, what about the direction of this unit vector? ये जो यूनिट वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन कैसे आता है? Direction of unit vector is given by right hand thumb rule. Now you must be thinking, what is this right hand thumb rule? How this will be applied? ठीक है, बहुत सिंपल है, बताएं. See, right hand thumb rule. Now see, this is my right hand. Okay, this is left one, this is right one. Okay, I am taking my right hand. This is the finger line. ये ध्यान से देखना, ये finger line है. This is finger line और ये thumb line है. Fine. तो करना क्या है? सबसे पहले finger line and thumb line को perpendicular, दोनों को कर दिया. Now finger line and thumb line, they both are perpendicular to each other. एक बात और नोट करो, जो फिंगर्स हमारी ह्यूमन बींग्स की कर्ल होती हैं, दे आर कर्ल्ड लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स. किसी का उल्टा तो कर्ल नहीं होता है, चेक कर ले बेटा, उल्टा नहीं होता है. मेरा तो नहीं हो रहा है, इट मीन्स आई एम अ ह्यूमन बींग. अगर किसी का भी उल्टा हो रहा है, ओके, तो गो एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बींग. फाइन. नाउ चलो, दैट वाज अ पार्ट ऑफ जोक. Basically, curling of the finger will take place like this. Okay, now keeping this finger line and thumb line perpendicular to each other, what you have to do, you have to place your finger line, this, ये finger line है, ये वाला. You have to place your finger line along the first vector. ठीक है, along the first vector, A cross B. A क्रॉस बी में जो फर्स्ट वेक्टर है वो कौन सा है? फर्स्ट वेक्टर इज ए. यू हैव टू कीप दिस फिंगर लाइन अलोंग द फर्स्ट वेक्टर. उसके बाद कीपिंग द थंब परपेंडिकुलर टू द फिंगर लाइन, आपको फिंगर्स को कर्ल करना है. कर्ल करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर. सेकंड वेक्टर इज बी, फर्स्ट इज ए, तो ए टू बी कर्ल करना है लाइक दिस. ओके, फाइन. तो ए क्रॉस बी फॉर द सिचुएशन सी, मेरा हैंड, माई फिंगर लाइन इज अलोंग फर्स्ट वेक्टर. फाइन, ठीक है. सेकेंड वेक्टर इज बी. आई एम कर्लिंग माई फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड. थंब इज परपेंडिकुलर टू द पेज. तो द डायरेक्शन इन विच दिस थंब इज पॉइंटिंग, ओके, direction in which my thumb is pointing, that is the direction of the result. Direction of result, which always will be in a plane, which always will be perpendicular to the plane containing both the vectors A and B. Okay, both the vectors A and B, ओके, उस प्लेन के हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा. इस सिचुएशन के अंदर ए क्रॉस बी इज कमिंग आउट ऑफ पेज, अपसाइड आ रहा है लाइक दिस. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम पेज. नाउ इफ आई आस्क यू, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए? व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर? देखो, अगर मैं आपको कहता हूं कि यू हैव टू राइट बी क्रॉस ए, कंप्लीट रिजल्ट, देन यू विल बी राइटिंग इट समथिंग लाइक दिस. बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, magnitude of a vector, and then sine of theta. Theta is the angle between a and b vector. What about direction? ये जो यूनिट वेक्टर आएगा, ये कैसे आएगा? How? Now, आपका जो A है, that is here, as given in situation, और B जो है, that is here, B vector, and this is smaller angle between them. अब डायरेक्शन के लिए what you will be doing? You will be applying right hand thumb rule. How right hand thumb rule will be applied? Keeping your finger line and thumb line perpendicular to each other. Okay? Like this, perpendicular to each other. क्या करोगे? You will now
अलेन योर फिंगर लाइन अलोंग सेकेंड वेक्टर, नहीं फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी क्रॉस ए, फर्स्ट वेक्टर इज बी। बी के अलोंग अलेन कर दिया, लाइक दिस कर दिया। अब हमें कर्ल करना है फिंगर्स को फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, दैट इज बी टू ए। बी टू ए कर्ल करते हैं, नहीं हो रहा है ना, तो इट मींस अब हैंड को ओरिएंट करना पड़ेगा थंब को डाउन साइड। थंब को डाउन साइड कर दिया, थंब डाउन से, बट कीप दिस फिंगर लाइन एंड थंब लाइन परपेंडिकुलर, ये थंब डाउन साइड आ गया। नाउ यू हैव टू कर्ल द फिंगर फ्रॉम बी टू ए, बी क्रॉस ए फाइंड करना है, बी टू ए, वी आर एबल टू कर्ल। नाउ द डायरेक्शन ऑफ thumb is perpendicularly inward the page. Okay, so direction of B cross A vector will be perpendicularly inside the page. तो in this situation जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा यहां पे n cap, that will be pointing which direction? Perpendicularly inside the page. So you must have understood. Now if I say what is difference between A cross B and B cross A, जरा एनालाइज करो फटाफट से, just concentrate. What is difference between A cross B and B cross A? A cross B is AB sin theta, है ना, एंड साथ में यहां पे यूनिट वेक्टर आएगा। B cross A is BA, AB एंड BA नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। Sin of theta, same thing, smaller angle. Now the difference between both the situations is A cross B is perpendicularly, unit vector perpendicularly out from the page. Yes? And B cross A is unit vector perpendicularly inside the page. अब ध्यान देने की बात है, अगर इस एक्सिस को perpendicularly out को मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, तो perpendicularly in वाला डायरेक्शन कैसा होगा उसका? नेगेटिव होगा कि नहीं? तो दैट इज माइनस n कैप। होप दिस इज क्लियर। ओके, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, दे बोथ आर सेम, बट एक नेगेटिव का चक्कर है बस, लाइक दिस, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, है ना, पर अभी कंप्लीट नहीं है, इनकंप्लीट। Negative. Magnitudes are same, but directions are opposite. Hope this is clear. So this dot product and cross product, okay, you know, we will be studying these both things in detail. In next lecture I'll be taking dot product application basically, okay, and details of dot product, and in the next then we will be taking vector product. Okay, thank you, have a nice day.